Good afternoon, everyone. This is Navjot Singh. I welcome you all on the behalf of Tally Solutions. आज का वेबिनार बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा रेलिवेंट है MSMEs के लिए और उन तमाम बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर रेंज करता है 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में। सो आज का जो वेबिनार है वो है ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट्स कि क्या इसका प्रोसीजर है, क्या कंसेप्ट है, आप किस तरह आपका बिजनेस किस तरह से इम्पैक्ट होगा, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव विद अस सीए अर्चना जैन जी, who is having a vast experience for more than 14 years in indirect tax field and have represented a large number of MNCs and SMEs by assisting them in their litigation and providing them the advisory for their businesses. She is visiting faculty to PhD Chamber, NASIN, and many other eminent institutes. And she is with us today to provide her point of view and her aspect related to practical aspects. And from Delhi, we have Mr. Sahil Bohra ji, who is a business manager and has been associated with Tally for more than 3 years. He has got a lot of experience of Tally as a product and the related domain expertise as well. His area of expertise includes knowledge of GST domain and Tally product. And today he'll be showcasing us the functionality of TallyPrime, which makes the business operations across segment simpler. And with it, he'll also be demonstrating how e-invoicing can be generated in a click of a button by using Tally software. So with this, I would request Archana ji to initiate the session. Thank you so much, Navjot, for the humble introduction, and thank you, Teddy, for giving us this wonderful opportunity to come forward and address this new issue on e-invoicing. And the reason for e-invoicing, we all are aware of because of the running of the parallel economy, or we can say that large number of fraudulent transactions are happening where they are saying that these are only the trading of the bills and no actual supplies having any kind of incidents with these kind of the invoices. So yes, the government is of the opinion that yes, it is high time for them to curb the parallel economy, to curb the issuance of the fraudulent invoices, and also to safeguard the interest of the taxpayer and also the interest of the bona fide taxpayers. So with this intention, we have seen that threshold earlier was 100 crores, then 50 crores, then reduced to 20 crores, 10 crores, and now they are also coming up with the thresholds lower to that what we are seeing. And there will be a future time very near in the future where they may be having made it, have made that mandatory for each and every one of us sitting over here attending this webinar to have this policy of getting your invoices issued on the e-invoice portal itself. So this is the basic background, and yes, we have to see कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ई-इनवॉइसिंग की बात करेंगे। और बेसिकली ये ई-इनवॉइस है क्या? ई-इनवॉइस आपका एक रियल टाइम के ऊपर आपका एक ट्रांजैक्शन आप एक तरह से पंच कर रहे हो एक गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके, whatever transaction you are conducting. So it is basically a real time reporting. And I hope, Navjot, we all are aware there was a provision under VAT also that everyday sales has to be closed down. There was a provision of T1, T2 form. So we are aware that they have this mandate requirement where we have to report them on real time basis. So I'll just touch upon one fact over here. When the real time provisioning is being introduced, that means whatever invoice I have to issue, I have to punch in on real time. So that means it is also curbing the options available with the taxpayer with an intention to evade taxes that he may plan at the end of the financial year. Because now he will not be able to make those kind of amendment which many people who have this intention of evading the tax liability or making that provisions happen in their books of account with which they are reducing the tax liability and with the intention of evading the tax. I'm only talking about the people who had this malified intention of evasion of the taxes. They will be the most who will be hampered with this new provision of e-invoicing with the reducing threshold. What is your take on this, Navjot?
बिल्कुल सही बात है because this segment when we talk about from 10 CR to 20 CR, I would not say that everyone is indulged into fake invoicing, but yes, many firms were created with the introduction of GST and many fake invoices were circulated. So that circular trading, obviously it will be impacted a lot with e-invoicing. And if we see the trend, like, government initially introduced it like for the large large MNCs, like for the turnover of more than 500 crore. And today we are like with a threshold of 10 to 20 crore. So मतलब वो एक दायरा बहुत कम हुआ है अब. So obviously it will be a great check on that fake invoicing thing. Yes. So large number of taxpayers are involved now. So they are increasing their bandwidth. और अगर हम देखें तो काफी फेज्ड मैनर में उन्होंने इसको लेके आए हैं. इससे पहले अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो काफी कंट्रीज में नहीं है ई इनवॉइसिंग. इनफैक्ट यूएस इज आल्सो एट प्रेजेंट दे आर वर्किंग ऑन दिस ई इनवॉइसिंग पोर्टल. एंड जो यूएई है, जो कि रिसेंटली जिसने टैक्सेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, वहां पे दे आर आल्सो काइंड ऑफ बिल्डिंग दिस ई इनवॉइसिंग thing there. So India, we can say that, one of those leading countries in which e-invoicing will be there. इससे पहले साउथ कोरिया की बात करें, so they gave a 3-year window when they introduced e-invoicing. तो likewise if we see, तो पहला जो इन्होंने इस फेज लेके आए थे, ये लोग 2020 में लेके आए थे, जो कि 500 करोड़ की कैटेगरी के लिए था. एंड टुडे धीरे धीरे वो 100 करोड़ के लिए आया, फिर 50 करोड़ के लिए, फिर 20 करोड़ के लिए, फिर 10 करोड़ के लिए. अब धीरे धीरे, अब ऑब्वियसली इट विल बी फ्यूचर ओनली, कि एक टाइम आएगा जब सारे असेसर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, सबके लिए ही ई-इनवॉइसिंग विल बी मैंडेटरी. एंड this is a great step towards the digital revolution when we talk about GST regime. तो सारी चीजें आज की डेट में, लाइक आप असेसमेंट की बात करें, आप रिटर्न्स की बात करें, रिफंड की बात करें, किसी भी तरह का कोई नोटिस आ रहा है आपका, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. अगर अब आज के टाइम में वो नहीं है, तो वो धीरे धीरे दे आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SMEs ऑल्सो, फॉर बिकॉज अब अगर हम किसी कंसेप्ट की बात करते हैं तो उसके प्रोज कॉन्स दोनों होंगे, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें तो इसके बेनिफिट ही है कि आपको जो डेटा है वो रियल टाइम पे आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आप अपना बिजनेस बड़ा सीमलेसली कर सकते हो. अब ये सारी चीजें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि जो वो पोर्टल है, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितना रॉबस्ट है. कि आपने अपना सिस्टम तो रॉबस्ट कर लिया, बट दैट अनदर सिस्टम, जैसे कि जीएसटी का पोर्टल है जिसपे काफी बार एरर आ जाते हैं, तो उसी तरह से ही वो सिस्टम भी रॉबस्ट होना चाहिए, ताकि आपका डे टू डे बिजनेस हैम्पर ना हो, और आपका यू डोंट इन्वेस्ट मच ऑफ टाइम इन दैट कि आपको कोई इशू आ रहा है, आप उसका ग्रीवेंस रेज कर रहे हो. सो दैट शुड नॉट बी देयर. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द बोथ साइड, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव साहिल विद अस, जो आपको बताएंगे कि कैसे ई इनवॉइसिंग टैली के थ्रू आप ये सारी चीज को मैनेज कर सकते हो. मैं इसी की बात कर रहा था कि हम हमारा सिस्टम कितना मर्जी रॉबस्ट कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लिच तो आ ही जाते हैं. तो ई इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें, तो एक कंसेप्ट है जो आपके ट्रेडिशनल इनवॉइसिंग सिस्टम को कनेक्ट करता है गवर्नमेंट से, ताकि आप जो भी इनवॉइस काट रहे हो अपने बिजनेस से, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई का हो, चाहे इनवर्ड सप्लाई का हो. इनवर्ड सप्लाई तो वो 2A 2B से मैनेज कर लेते हैं, कि हाँ देख लेते हैं कौन सा इनवॉइस आपने क्या परचेज किया, आपने क्या सेल की है. लाइकवाइज आउटवर्ड सप्लाई जो ई इनवॉइसिंग के थ्रू वो मैनेज करेंगे. इस सारी प्रोसेस से हो क्या रहा है, अगर हम इनवर्ड सप्लाईज की बात करें, 2B की 2A की बात करें, तो वो इनवॉइसेस नेक्स्ट मंथ के 13 या 14 तारीख तक गवर्नमेंट को दिखते हैं. गवर्नमेंट को पता लगता है कि हाँ इन लोगों ने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ई इनवॉइस, सो एज मैम सेड दैट इट इज अ रियल टाइम कंसेप्ट, कि आप जैसे ही इनवॉइस वेंडर के लिए काट रहे हो, आपका माल जैसे ही डिस्पैच हो रहा है आपकी फैक्ट्री से या आपके आउटलेट से, तो आपको तभी के तभी ई इनवॉइस, जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल. वो गवर्नमेंट को हाथों हाथ दिखेगा कि हाँ एक इनवॉइस जनरेट हुआ है. एंड समहाउ ई-वे बिल इज आल्सो लिंक्ड विद दिस फंक्शनैलिटी. तो जैसे ही आप ई इनवॉइस बनेगा, हाथों हाथ ही ई-वे बिल भी हाथों हाथ बन जाएगा. अब वो कैंसिल कैसे होगा, उसकी क्या प्रोविजंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. रेलेवेंट लॉ क्या है, ऑब्वियसली ई इनवॉइस कंसेप्ट लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 ऑफ जीएसटी एक्ट, सेक्शन 31 सेक्शन 16.
और रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल 46, 46A, 48 जो मैनर को बताता है, 49, 54 और 138A, इन सारे प्रोविजंस में नेसेसरी चेंजेस किए गए थे ई इनवॉइसिंग के रिस्पेक्ट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई होता है, मतलब आप कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे अपनी अपने बिजनेस में, आपको वो ई इनवॉइसिंग मॉड्यूल से जनरेट करना है। फर्स्ट इज आपका जो नॉर्मल इनवॉइस है, दूसरा क्रेडिट नोट, तीसरा डेबिट नोट। क्रेडिट और डेबिट नोट की हम बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में जो कि जीएसटी क्रेडिट और डेबिट नोट्स है, ना कि फाइनेंशियल। तो सिर्फ इन तीन रिस्पेक्ट में ही आपको इनवॉइस जनरेट करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिलहाल ये जितना भी मॉड्यूल और जितना भी हम मॉडल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ B2B बिजनेस के लिए है, B2C के लिए नहीं है। अगर आप अपने एंड कंज्यूमर या कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, कुछ गुड्स दे रहे हैं, उस केस में आपको ई इनवॉइस नहीं देना है। Navjot, there is one attendee who has raised hand. So we have just started the note, presentation, but still, so can we take it side by side or what you'll suggest? I think we can take it after this one. Session, na? Okay. So I'll request the attendees to kindly put their questions in the question and answer section, because we have just started the presentation. There may be things that your question may have been taken care while we are deliberating the presentation. So, and any questions that are left out, we will be taking them at the end of the session before we will be winding up the session for the day. दूसरी हम अगर बात करें तो ई इनवॉइस रेज कौन करेगा, ये हम क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट ई वे बिल, तो ई वे बिल को जनरेट करने का 3 लोगों के पास राइट है। सप्लायर कर सकता है, सप्लायर ने नहीं किया तो रेसिपिएंट कर सकता है, दोनों ने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर कर देगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ई इनवॉइस, तो ये सिर्फ सप्लायर को ही जनरेट करना है, उसी का पोर्टल है, उसी की एप्लीकेबिलिटी है और वही सिर्फ जनरेट कर सकता है। हालांकि कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कैटेगरीज है, जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उसके थ्रू अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो जनरेट करेगा। सपोज इफ यू आर सेलिंग गुड्स थ्रू जोमेटो, स्विगी, अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में है या कोई भी इस तरह के जो पोर्टल है, उन केसेस में वो जो ऑपरेटर है वही इनवॉइस जनरेट करेगा। एलिजिबल सप्लाईज की बात करें तो अर्चना जी, आपका क्या कहना है कि कौन कौन सी सप्लाईज हैं ई इनवॉइस में, जो मतलब जो एलिजिबल सप्लाईज हम कह सकते हैं, जिस रिस्पेक्ट में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है? So basically, if we talk about, so they are only talking about taxable supplies. So that means taxable supplies and B2B supplies. If we see earlier when this provision of e-invoicing was about to be introduced, they have taken care that export invoice has to be out of the ambit of e-invoice. But then that has also again brought in with the issuance of when the notification was issued, so that even export invoice has to be issued. So basically their intention is to issue tax invoice. And tax invoice also with respect to your B2B supplies, your deemed supply. That means even if I'm having a distinct person in my different state, but because of the provision of the application of section 25 subsection 4, and also with respect to the definition of related party, so it will be deemed as a deemed supply, and I have to issue a tax invoice. So wherever the application of tax invoice is there, we have to issue the e-invoice. That means B2B supplies, they have categorically exempted B2C as of now, because that will be something they will be having in their mindset in future times to come. But as on date, only B2B supplies, deemed supply, supply by an SEZ developer. This is very important. SEZ supplies are out of the ambit of e-invoice, but supply by an SEZ developer is not out of the ambit of the e-invoicing. Now, again, as I have mentioned, export of goods or services has been taken in the ambit of the invoicing. Deemed export, that is with respect to your notification, 48/2017. Credit note and debit note, as you have already mentioned, with respect to your tax invoice. That means which have the implication under the GST law, and supply to governments and PSUs, because that is again is not an exempt supply. So these are your eligible supplies for which by default, if you are coming under the threshold, you have to issue an e-invoice. That is a real-time invoice has to be uploaded on the portal and IRN has to be generated. Right. मतलब जितना important eligible supplies हैं, उतना important ही ineligible supplies को भी जानना है. Yes. So first and foremost is B2C supply. Bill of supply, why? Because it is an exempt supply and e-invoice has to be issued with respect to taxable supplies. So that means your nil rated supplies or your exempt supplies are out of the ambit of e-invoicing as on date.
not job work. Somebody has also raised this question. So that means the invoice issued by a job worker, I should say. Correct? That has to be out of the ambit of the e-invoicing. Then your import again is out of your ambit, because import, you are not the one who is issuing the invoice. The invoice has been issued by the supplier only. Exempt supplies, as we have already dealt, and financial credit note. That means which does not have any implication under GST taxation, that has to be out of the ambit of the invoice, because otherwise also they don't need these kinds of reporting on their portal. They need only reporting which is having any implication on the revenue. Yes, Navjot. बिल्कुल, मैं जॉब वर्क के रिस्पेक्ट में कह रहा था कि जॉब वर्क में भी जैसे मैं अपना गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूँ, तो उसमें कोई टैक्स इवेजन का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वो प्रोविजंस अपने आप में ऐसे हैं कि अगर आप उस प्रोविजंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको टैक्स तो पे करना ही है. देयर इज अ टाइम लिमिट आल्सो, एवरीथिंग इज देयर. और बिल ऑफ सप्लाई, जैसा कि आपने बोला कि एग्जाम सप्लाई और नील रेटेड सप्लाईज में आता है बिल ऑफ सप्लाई, अगर या बिल ऑफ सप्लाई हम तब इशू करते हैं जब वो सप्लाई ही नहीं है जीएसटी के हिसाब से, तो उसका भी कोई गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करने का आई थिंक कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में भी. सो ये इनएलिजिबल सप्लाईज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि एलिजिबल सप्लाईज. आप देख सकते हैं कि कौन सी सप्लाईज आप कर रहे हैं. काफी लोग ऐसे हो सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पंजाब और हरियाणा एरिया, मैनी पीपल आर इन एग्रो कमोडिटीज सेक्टर, कि काफी उनकी सप्लाईज ऐसी हैं जो कि जिन पे टैक्स नहीं है, जिन पे जो कि एग्जाम सप्लाईज हैं, तो ये प्रोविजंस आप पे अप्लाई नहीं होंगे इन फ्यूचर. I think they might include exempt supply into this just for a check on the business, but मेरे ख्याल से वो शायद लास्ट कैटेगरी होगी. आफ्टर दे विल बी डन विद द टर्नओवर थिंग, कि सारे टर्नओवर्स के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने, सब कुछ अप्लाई हो गया, उसके बाद शायद वो धीरे धीरे इन सारी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे इसमें. So that means with this, my understanding is, Navjot, because there is a restriction of B2B only with respect to e-invoicing. So that means, I mean, there is no issue with respect to my invoice under GST. I can have B2B invoice and I have to have a B2C invoice also. So my GST series will be different. But the only requirement what we are saying is that you have an additional requirement of issuing e-invoice also. So that is, there should not be any restriction and it should not be mixed up. That once you are issuing the invoice, then your normal GST invoice will not be issued. That has to be punched. Now, the data is only punched in e-invoice. So your books of accounts must be having some kind of your information. So you can have the same series, but the only requirement is your B2B invoice will be transferred to e-invoice. Right. मतलब अगर हम इसको क्रक्स में देखें तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है. Yes. और अगर मान लीजिए आपका बिजनेस 40% ऐसी कैटेगरी का है जिसके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है. पहली बात तो ये आपको टर्नओवर देखना है कि आप उस कैटेगरी में आते हो नहीं आते हो, 10 करोड़ से 20 करोड़ में. फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि इन सप्लाईज में से कौन कौन सी सप्लाईज हैं जो कि एलिजिबल है ई इनवॉइस के लिए. अगर आपकी कुछ एग्जाम सप्लाईज है तो उसकी सीरीज आप अलग कर सकते हैं. Somebody has asked me what is financial credit note. So this is a very different concept, but otherwise financial credit note means which is out of the ambit of timeline with respect to your GST. जिसमें मतलब आपका कोई भी अगर जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं है yes. ऐसी ट्रांजैक्शन पे, तो उस केस में अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, या जैसा मैम ने बोला कि अगर वो जीएसटी की जो टाइम लिमिट है उसके बाहर जा रहा है वो भी वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट ही कहलाएगा वो. करेक्ट. इसके अलावा कुछ जैसे हमने सप्लाईज की बात की है कि काफी सप्लाईज पे नहीं लगता है, उसी तरह से काफी सारे सप्लायर्स भी हैं जिन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ देम कैन बी एसईजी यूनिट्स. जैसा कि मैम ने बताया कि डेवलपर पे ही एप्लीकेबल है, बट एसईजी यूनिट्स जो है, जो डेवलपर के अंदर यूनिट्स जो बनी हुई हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है. देन इंश्योरेंस कंपनीज, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसी भी इसमें इंक्लूडेड है. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो भी बसेस वगैरह की सर्विसेज हैं. उसके अलावा जो मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमा है, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, आईएसडी जो है, और ओआईडीएआर जो पर्सन रजिस्टर्ड है, रूल 14 ऑफ सीजीएसटी रूल, जिसमें कि कुछ आईटी की सर्विसेज इंक्लूडेड है. तो इन सारे केसेस में इन सारे सप्लायर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दे आर हैविंग B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील सप्लाई, इन पे वो स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप किसी भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आप पे ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है एज ऑफ नाउ. इसके अलावा मैम एक सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी रेज हुआ था इनिशियली व्हेन ई इनवॉइसिंग केम,
कि आरसीएम की अगर हम बात करें तो आरसीएम के केस में क्या ये इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? सो यहाँ पे भी हम यही क्लैरिफाई करना चाहेंगे, इफ द इनवॉइस is issued by the notified person is in respect of the supplies made by him but attracting reverse charge, that is 9(3), RCM is applicable, because here the issue is threshold. It is not an exempt supply. It is exempt supply with a limited, what should I say, limited application of that exempt supplies definition, but otherwise this supply is not an exempt supply. The exempt supply is only with respect to section 17, where the credit eligibility is being denied. Otherwise, these are taxable supplies. That's why they are falling under section 9. The levy is there. Otherwise, they would have fallen under section 11 only. So, on other hand, where supplies are received by an unregistered person or through the import of services, e-invoicing does not become applicable, because e-invoice is again with respect to your taxable supplies and on a taxable person. So, if I am unregistered, even if 9(3) is not invoked, because section 24 has an exclusion that if I am falling under the provisions of 23, then 24 will not be applicable. So in this manner, if these are the conditions, then e-invoice is not applicable. Otherwise, even if you are falling under 9(3), e-invoice is applicable. बिल्कुल, मतलब आरसीएम की आपकी कोई भी आउटपुट सप्लाई आपको किसी भी ऐसे बिजनेस में है जिसमें कि आपके रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस लगाना पड़ेगा। ओनली 2 कैटेगरीज वी कैन से कि अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड से सप्लाई ली है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिया है तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक कि हम प्रोसेस की बात करें तो हम टेक्निकल इसमें बात नहीं करेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा, बट प्रोसेस यही है कि आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे, एक जेसॉन फाइल है उसको आप क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको ई इनवॉइस का जेसॉन आएगा और उसके बाद आप उस जेसॉन फाइल से ई इनवॉइस को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप एक क्यूआर कोड, जो आजकल शायद सब समझते होंगे, एक कोड है जो यूनिफाइड कोड होता है, वो आपके इनवॉइस पे आ जाएगा। So basically, e-invoice is comprising of this IRN or QR code only. That's a digital code or digital coding of each and every invoice, from which you can have that information. Even anybody can have that information from that portal. अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस चीज को, तो आपने कोई इनवॉइस बनाया, उसको गवर्नमेंट एक नंबर दे रही है यूनिक, जो कि सिर्फ आप ही के उसी पर्टिकुलर इनवॉइस को दिया गया है। अगर आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल भी कर देते हैं तो भी आप उस आईआरएन, जिसको हम इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट दे रही है, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। और जो आईआरपी है आपका, बेसिकली वो क्यूआर कोड भी जनरेट करके दे रहा है, जो कि अपने आप में यूनिक होगा, जिसमें आईआरएन होगा और जो अदर एलिमेंट्स आपने इनवॉइस में दे रखे होंगे वो सब होंगे। क्यूआर कोड को आप अपनी मोबाइल या किसी भी ऐप के थ्रू आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपने ई इनवॉइस अब तक देखा है किसी भी कंपनी का, बिकॉज सिंस ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, अब 20 करोड़ से ज्यादा कंपनियों पे ये एप्लीकेबल है, तो आप देख सकते हैं किसी भी सैंपल ई इनवॉइस को। अब अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग इट यूनिक। अब अगर आईआरएन की बात करें तो आईआरएन क्या है? आईआरएन बेसिकली एक कैरेक्टर हैश है 64 डिजिट्स का, जो कि हर इनवॉइस को दिया जाता है। जो आपका सॉफ्टवेयर है, बेसिकली कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जो भी आप आज की डेट में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली इस हैश को कन्वर्ट करता है क्यूआर कोड में। तो ये साहिल जी बाकी ही इज द एक्सपर्ट पर्सन, वो बताएंगे कि किस तरह से प्रोसेस रहती है, बट ये एक तरह से कंसेप्ट है कि आपके इनवॉइस को एक डिफरेंट कोड दिया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद क्या ये अपने आप जीएसटीआर 1 में शो करेगा जो इनवॉइस आपने इशू किया है। सो ऑन सक्सेसफुल रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस डिटेल टू आईआरपी, आईआरपी बेसिकली एक इनवॉइस का पोर्टल है जिसपे आप इनवॉइस को रजिस्टर कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट के साथ। जैसे ही आप आईआरपी पे अपलोड करते हैं कोई भी डिटेल इनवॉइस की, तो ये अपने आप जीएसटी सिस्टम में भी सेव हो जाती है। तो बेसिकली 2 आपके पोर्टल हैं, एक आपका नॉर्मल जीएसटी पोर्टल है जिसपे आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, एक आईआरपी पोर्टल है। जैसे ई वे बिल का अलग पोर्टल है, वैसे ही ई इनवॉइसिंग के लिए भी अलग पोर्टल है। उस पे आप अपना इनवॉइस रजिस्टर करवाएंगे। जैसे ही वो आप रजिस्टर करेंगे, आपका इनवॉइस क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली इट विल ऑटो पॉपुलेट इन जीएसटीआर 1। आपकी आईआरएन और जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो भी शो होंगी, और ये भी शो होगा कि ये जीएसटीआर 1 में कहाँ से आया, मतलब दिस हैज कम फ्रॉम ई इनवॉइस, उसमें सोर्स भी मार्क्ड होगा। और अगर मान लीजिए आप
आपका कोई डेटा है जो आपने आईआरपी को तो दिया था, आपने अपलोड तो किया था ई इनवॉइस के लिए, लेकिन आपके जीएसटीआर 1 में नहीं आ रहा है, तो उसको आप मैनुअली भी पंच कर सकते हो. So that's how the process is there. अब कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा डेटा है जो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है जीएसटीआर 1 में. अगर हम टेबल नंबर 4, मैं टेबल वाइज बात करूंगा जीएसटीआर 1 के, तो टेबल नंबर 4 है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स अदर देन सप्लाईज कवर्ड बाय टेबल 6. तो जो यूएन होल्डर्स और रजिस्टर्ड पर्सन को अगर मैं सप्लाईज कर रहा हूँ तो टेबल 4 में आती है, तो वो इसमें शो नहीं करते कुछ डिटेल. सप्लाईज अदर देन अट्रैक्टिंग आरसीएम और सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी शो नहीं करेगी इसमें. सप्लाईज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एक्सपोर्ट्स की डिटेल हो, सप्लाईज मेड टू एसईजी यूनिट्स या एसईजी डेवलपर हो, डीम्ड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, या फिर एचएसएन की भी बात करें, तो एचएसएन वाइज समरी भी ऑटोमेटिक नहीं आती है. बेसिकली सिर्फ इनवॉइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही अपलोड होती है. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आते हैं, आपको मैनुअली पंच करने पड़ते हैं. उसके अलावा वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन का एक अलग से इन्होंने एक लिंक भी दे रखा है कि इस लिंक पे जाके आप अगर आईआरएन या उसका एक यूनिक कोड अगर डालेंगे तो वो वेरीफाई होगा. उसके अलावा जैसा मैंने बताया क्यूआर कोड से भी यू कैन गेट इट वेरीफाइड. So that's the process for verification of e-invoice, that whether that e-invoice has been valid or not. Like there might be an issue because when we talk about fake invoicing, and since there can be a tendency when few of the businessmen try to bypass this procedure and they just use the used IRN in their e-invoice to issue the fake invoice. So just to prevent that, there is a mechanism of verification. उसके अलावा है प्रिंटिंग. अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर लिया, once you uploaded it on IRP and you got the e-invoice, so is it required to get it printed also? So you can give it a print like through invoice registration portal. वहाँ पे option आता है उसको print करने का. And if you are using any software, so that as I said that it will convert that the hash to the QR code, and seller जो है वो उसको QR code show करना जरूरी है उस पे for its validation, and the process will be defined to you by SIL. इसके अलावा है ई-वे बिल की अगर हम बात करें अर्चना जी, दैट क्योंकि ई-वे बिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जब हम गुड्स के मूवमेंट की बात करते हैं, तो ई इनवॉइसिंग के साथ ई-वे बिल को किस तरह से कनेक्ट किया गया है? Earlier also they were under this provision that they will be getting this IRN concept even on the e-way bill, ताकि मेरा physical invoice को carry करने का जो provision है वो थोड़ा कम हो सके. और हमने देखा है कि जब मैं bill to ship to मॉडल में अपनी supplies देती हूँ, तभी भी मुझे एक ऐसे यूनिक सिस्टम की जरूरत थी ताकि मेरा financial data जो है वो सामने वाले को visible ना हो. So the invoice when we are generating an e-invoice on the e-invoice portal, so there they also have a facility you can directly issue the e-way bill also. So then your duplication of manual punching the data will be saved, and all whatever you want to punch in the data, the details will be auto uploaded. But yes, please be cautious, because once the e-invoice on the portal has been issued and the e-way bill is also connected with that, then any modification will not be possible, neither on the e-way bill nor in the e-invoice. So please be cautious. And you can only feed in part A. Again, part B has to be supplied. The transporter will be eligible to fill in the part B detail in case you don't have them, because in case you don't have the vehicle number or the transportation detail, then you will not be able to fill in the part B. And at times what we have seen that you may issue a part A and an invoice much ahead before the goods are actually moved upon, because either you have to make them supply at the transportation place, or there may be like a part load. So then until unless the full load is completed, the vehicle will not be having the movement. So that is the things that you have to take into consideration. So in case both the part A and part B of the e-way bill are provided while reporting the detail of the e-invoice on the IRP, then obviously you will be generating an e-way bill, a complete e-way bill with part A and part B directly through the portal of e-invoice only. And all the information is being transferred to the e-way bill portal. So now any amendment either in the value or in the quantity
or anything that you want to amend in your e-way bill, that will also not be possible without having the implication on the invoice and other thing also. So please be cautious. Otherwise, you can directly issue the e-way bill also once you have generated the e-invoice from the portal. दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, दोनों ऑप्शंस हैं, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज कॉशियसली यूज करिए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि कई बारी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ अमेंडमेंट है या कहीं कुछ सामने वाले ने कैंसिल कर दिया, सामने वाले ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, तो कुछ भी अगर ऐसा आता है तो फिर आपके लिए इम्प्लीकेशन दोनों तरफ से हो जाएगी कि ई-वे बिल पे भी चेंज करना है और ई इनवॉइस पे भी चेंज करना है। और ई इनवॉइस हम अमेंड नहीं कर सकते, we'll have to cancel it every कैंसिल time. इट, करेक्ट, वो मतलब प्रोसेस को और ज्यादा टीडियस बना देता है, that every time you're generating the e-invoice and then canceling it. Yes, the process has to be followed and process is a tedious process. जो कि एक चैलेंज भी अगर हम SMEs की बात करें, because finding a qualified staff in these days is a problem who understand the technical stuff, कि जिसको टाइम टू टाइम अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई भी सिस्टम में तो वो उसको ग्रीवेंस रेज करनी भी आती हो, एंड ही अंडरस्टैंड दी टेक्निकलिटीज जिस भी तरह की हैं कि आपको कौन सी चीज कब करनी है। जैसे मैम ने बोला कि ई-वे बिल की अगर हम बात करें तो आप जनरेट दोनों कर सकते हो, लेकिन आप ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर पाओगे जो साथ में जनरेट किया था। आपको पहले इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, ई इनवॉइस, देन यू विल हैव टू कैंसिल द ई-वे बिल। सो वो एक बड़ी टीडियस प्रोसेस हो सकती है अगर आप उसको कॉशियसली अप्लाई नहीं करते हो। तो अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, सो एज वी सेड कि वी कैन नॉट अमेंड द ई इनवॉइस, बट आपके पास 24 आवर्स होते हैं टू कैंसिल इट। तो ये एक प्रोसेस है जो कि बेसिकली अगर हम इसके कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें कि ये कंसेप्ट क्या था, अगर वो अमेंडमेंट और इस तरह से टाइम पीरियड अनलिमिटेड दे देंगे तो फिर वो सारे कंसेप्ट को डिफीट करता है, वो पर्पस डिफीट करता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन गिवन कि आप इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। और अगर मान लीजिए आप 24 घंटे में उसको कैंसिल नहीं कर पाए और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये सप्लाई नहीं होनी चाहिए, सो आप उसको मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं GSTR 1 में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट अगेन आई एज मैम ऑल्सो सेड इनिशियली कि कोई भी आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसका एक लॉग तो क्रिएट होगा ही होगा, मतलब आपके पास क्रिएटेड और कैंसल्ड दोनों की इंफॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट के पास आपकी, कि आपने कितने ई इनवॉइस जनरेट किए थे, उसमें से आपने कितने कैंसिल किए। सो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी वहां पे। अब मान लीजिए अगर आफ्टर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस आपकी गुड्स डिस्पैच नहीं हुई है और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल आई गेस एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बिजनेस की किसी भी, तो उस केस में आप किस तरह से क्या करेंगे? तो इसमें भी कोई स्पेसिफिक अलग से कोई लॉ नहीं है, इसमें वही एक जनरल रूल सब पे सब चीजों पे अप्लाई करेगा कि आपका ई इनवॉइस कैंसिल ही हो सकता है। इस केस में आप नहीं कुछ भी कर पाएंगे, आप कैंसिल करके ही दोबारा नया जनरेट करना पड़ेगा, या अगर आपका वो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया तो यू कैन जस्ट कैंसिल योर इनवॉइस। अगर वो इफ सच डिस्क्रिपेंसीज नोट नोटिस्ड विद पीरियड, जैसे आप 24 घंटे में अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ऑर्डर कैंसिल हुआ है या गुड्स डिस्पैच हुई है, तो आपको उस GSTR 1 में नेसेसरी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ये है कि व्हाट इफ रॉन्ग HSN इज मेंशन्ड इन ई इनवॉइस, या फिर मैंने कोई गलत GSTN नंबर मेंशन कर दिया कस्टमर का। सब चीजों का एक ही जनरल आंसर रहेगा कि आपको अब क्रेडिट नोट इशू करने की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर वो GST से रिलेटेड है उसके अलावा आपको फिर मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ेंगी GSTR 1 में। तो एक रिकंसिलेशन, एक्स्ट्रा रिकंसिलेशन है जो आप एग्जिस्टिंग लिए भी कर रहे होंगे शायद अपनी क्रेडिट के साथ। अब आपको आउटवर्ड सप्लाईज की भी करनी है, कितने आपके फिजिकल इनवॉइसेस थे, कितने आपने इनवॉइसेस अपलोड किए थे IRP सिस्टम पे, कितने ई इनवॉइस जनरेट हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, किसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल आपको GSTR 1 में फाइल करने से पहले सारी चेक करनी पड़ेगी। आप ब्लाइंडली उस चीज पे फेथ मत रखिए कि जो आपने IRP पोर्टल पे अपलोड किया था वो आपके 1 में भी शो कर रहा होगा। काफी बार ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली कि काफी इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट नहीं होते हैं, तो आपको वो एक ग्रीवेंस पोर्टल है GST का, उस पर डालना पड़ता है, फिर देन इट टेक सम टाइम, एंड आपको ये प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा एक्सरसाइज, क्योंकि जिन लोगों पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और जिन पे नहीं एप्लीकेबल है, दोनों के लिए GSTR 1 की सेम डेट है। सो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है डेट के अगर हम बात करें, लेकिन आपको अपने मंथली बुक्स टाइमली क्लोज करनी पड़ेंगी
तो ही आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे 11 से पहले या 20 से पहले, अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। मैम व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक जो टाइमलाइंस हैं वो आपके हिसाब से सही हैं, या मतलब हाउ हाउ इट शुड बी मैनेज्ड बाय एनी बिजनेसमैन? As you have already answered, Navjot, the intention, if I see, then these timelines are very well within the frame of the intention of the lawmakers. But yes, and I think there has to be a certain timeline. Then only we can fully abide by the provision. Otherwise, like, it will be of no use. It will become redundant. तो इसलिए मुझे लगता है ये ठीक है। मैम अगर हम एक इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए इफ यू फॉरगॉट टू इशू ई इनवॉइस, मतलब आपको करना तो ई इनवॉइस ही चाहिए था लेकिन आपने फिजिकल इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस केस में आप मतलब किस तरह से मैनेज करेंगे इसको? आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप बाद में इशू करेंगे उसको, क्योंकि इनवॉइस तो आप कभी भी इशू कर सकते हैं। देयर इज नो टाइमलाइन, ओनली थिंग इज इट विल बी हैविंग द मेंशन ऑफ द ओरिजिनल डेट ऑफ योर इनवॉइस and the Right. date when e-invoice has been created, because it's a technique, it's a online portal, so artificial intelligence is playing its role. So there you will have the detail, so that means department will have the detail आपने invoice कब बनाया और आपको e-invoice बनाने की timeline क्या थी, but आपने उससे कितने time बाद e-invoice बनाया है, so that will be there, but you don't have any other choice. And now even they have made it mandatory also to give the declaration also, that in case you are not issuing an e-invoice, that means you have to give the declaration that you are not falling within the threshold that has been made applicable with the e-invoice provision. So आपने देखा होगा कि again 16 के अंदर भी ये condition उन्होंने डाल दी है कि आपके पास में जो invoice है as per rule 46, अगर वो e-invoice बनाने का नहीं है आपका, तो आपको ये declaration देनी होगी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मानना है। तो मुझे इससे लगता है कि उनका intention यही है कि everybody should be falling under the ambit of e-invoicing. Signing of the invoice, yes, e-invoice printable form will be signed physically or digitally. So digital to IRN is as good as signed, and because there is a amendment in Rule 46 only, that if the compliance is being made with respect to your IT Act 2000, then there is no need of physical signature. So same will apply over here also. Right. When we talk about responsibility of recipient, so as ma'am said that कि अगर आप रेसिपिएंट हैं और आपका जो सप्लायर है उस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल था, बट उसने आपको फिजिकल इनवॉइस ही दिया है, तो जो नया रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई इनवॉइस जिसका कि ई इनवॉइस होना जरूरी था, अगर वो नहीं है तो वो इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपके आईटीसी पे आएगा। आपका वो आईटीसी जो अथॉरिटीज हैं वो सेक्शन 16(2) के बेसिस पे आपका आईटीसी डिनाई कर सकती हैं, जो कि मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो अगर 1 अक्टूबर के बाद चाहे आप 10 से 20 करोड़ की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रेसिपिएंट भी हैं ऐसे सप्लायर्स के, तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो आपके सप्लायर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दोनों तरफ से टास्क है, मतलब इट्स टास्क बाय सप्लायर आल्सो, जिसको अपना सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शायद चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है काफी लोग सिर्फ एक इनवॉइसिंग नॉर्मल इनवॉइसिंग करते हैं। बहुत बड़े बिजनेसेस हैं जो कि अच्छे तरीके से उसको अकाउंटिंग को उस तरह से मैनेज नहीं करते हैं। अगर आप देखें तो कुछ टाइम पहले शायद कंपनीज के लिए भी रूल आया था कि उनको जो बुक्स हैं वो डेली क्लोज करनी है, जो टाइम पीरियड है वो रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस। तो मतलब ये सारा कंसेप्ट वही है कि आपको एवरी डे यू विल हैव टू check it, like सारे invoices and everything is there or not. And also they have to maintain an audit trail also, that has also made mandatory under ROC. Yes, that means now you cannot tweak with your books of accounts. That is the basic intention. एक बार आपने जो एंट्री पंच कर दी, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो एक्सपेंस की हो, चाहे वो इनकम की हो, that has to be there till the end of that financial year. That practice which quite a businessman follow, to put entries at the end of the year just to reduce the profit. Yes. That has been curbed. That has been curbed by this. Because sooner or later you'll have to follow what government is saying. So I think it's better you start with this from 1st of October, to start a practice to record and close at least monthly books, not at least daily. So close the books monthly. There should not be any entry at the end of the year. साल के last में आप कुछ भी adjustments मत कीजिए. It can be a problematic situation for you, especially for companies. There is a mandatory requirement now to close books on a daily basis. Then आपके हिसाब से मैम कौन-कौन से reconciliations हैं जो एक businessman को e-invoice के बाद करनी चाहिए? Like chartered accountant and accountants have become a reconciliation experts now.
Earlier it was GSTR1 with 3B, then it became 2A with 3B, now 2B with 3B, and now new reconciliation. E-Invoice with your GSTR1. That means your total turnover, what you are showing in your GSTR1 should be mapping with your B2B and B2C sale, for which one portion you have already issued invoice and other portion you have not. Then your E-Invoice and normal invoice with vis-a-vis 2A, 2B. Obviously, you have to reconcile that also. E-Invoice vis-a-vis IRN generated or not generated. उसमें तो कोई technical glitch नहीं आ गया है. Then your E-Invoice vis-a-vis E-Way bill. कि आपने जितनों के E-Invoice बनाए और आपकी ड्यूटी थी उतनों पे E-Way bill बनाने की, तो आपने वो E-Way bill बनाए या नहीं बनाए. So these are the reconciliation, and I have seen even during the audit procedures, even department is asking for you to present each and every E-Way bill with respect to your outward supplies, with respect to your inward supplies, and even for your supplies other than supplies, like where the goods has been transported to the job workers or any other thing. So please make sure that the provisions are very, very stringent, and you have to take care of all these documents and the reconciliations. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जी एक चीज महेंद्र और सर. भी है, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए ई इनवॉइस और ईवे बिल की जब हम बात करते हैं तो ईवे बिल के साथ आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. सो अगर आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और अगर आपकी गुड्स मूवमेंट कर रही हैं और कोई ऑफिसर आपकी गुड्स को इंटरसेप्ट कर लेता है तो वो ईवे बिल देखेगा और इनवॉइस देखेगा. नाउ ही डोंट नो दैट वेदर इट अप्लाइज टू यू और नॉट. ई इनवॉइस उस टाइम पे उसको नहीं पता लगेगा, बट आज की डेट में वो क्योंकि टर्नओवर वाइज है, बट सूनर और लेटर जब ये सारी कैटेगरीज के लिए अप्लाई हो जाएगा टर्नओवर के इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो गुड्स मूव कर रही हैं ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस हो. तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी रिकंसिलेशंस आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसे इंटरनल चेक्स बना सकते हैं अपने बिजनेस में, कुछ ऐसे कंट्रोल बना सकते हैं कि आपको ये टाइम टू टाइम ना करना पड़े, एक सर्टेन इंटरवल के बाद करना पड़े. जैसे आप मंथ के एंड में जब आप एक डे डिसाइड कर सकते हैं जिसपे आप सारी चीजों को चेक करेंगे, इन सारी चीजों को. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. उसके अलावा प्लान फॉर सप्लायर की आपको ई इनवॉइस सिंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस, सो what should be your plan. अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और आप पे ये सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है? पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर इज एलिजिबल टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, या आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ इनवॉइस जनरेट करता है, या सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या आप किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर से ये सारी चीजें कर सकते हैं. क्योंकि जो प्रोसेस है वो इस तरह की है कि आपको जेसन फाइल अपलोड करनी है, फिर वहां से सारी चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें बड़ी टीडियस हो जाती है. तो कोई विच सॉफ्टवेयर यू शुड यूज, या टैली से आप किस तरह से इस चीज को सिंपलर कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज अल्टीमेटली आपने अपने टाइम को रिड्यूस करना है. कोई नई चीज अगर इंट्रोड्यूस हुई है, सो आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर वाले की कि वो आपको ही शुड प्रोवाइड यू द वे टू डू इट इन अ लेसर टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नई चीज आने के बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हो पाया टाइम के साथ एंड यू आर नाउ मेसिंग अप विद ई इनवॉइसिंग. आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपर चेक्स नहीं कर पा रहे हो. सो दैट्स हाउ इट शुड बी. देन बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, जो क्यूआर कोड है, आपको उसको प्रिंट करना है, आपको क्यूआर कोड देखना है कि एलिजिबल हो एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको एक सैंपल बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड और नॉट. रेसिपिएंट की अगर हम बात करें तो उसको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए अपने वेंडर्स की जिससे वो माल खरीदता है, and he should see that whether the turnover is falling within the limits for which e-invoice is applicable or not. काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक एग्रीमेंट भी बना रही हैं अपने वेंडर के साथ कि अगर मान लीजिए आपने नॉन कंप्लायंस की ई इनवॉइसिंग की, तो जो आईटीसी है, जो रिस्क है आईटीसी का, उसको आप कवर कर सकते हो, अपने एक सेपरेट एग्रीमेंट बना सकते हो. देन एक्सपेंस विद ई इनवॉइस एंड विदाउट ई इनवॉइस could be accounted separately to trace valid tax invoices. और इसके अलावा जैसे आप अगर टैली यूज करते हैं तो आप IRN और एक्नॉलेजमेंट जो नंबर होता है उसको अपनी डेटा और मास्टर फील्ड में ऐड कर सकते हो ताकि आप ट्रैक कर पाओ IRN वाइज आल्सो योर ई इनवॉइस. देन
अब क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके अगर 10 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप इसको तो भी आप ई इनवॉइस इशू कर सकते हो। सो ये जो फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन है, ये गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज्ड है, ऐसा नहीं कि वॉलंटरली है। ऐसा नहीं है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो भी आप ई इनवॉइस इशू कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। So in any case, if you have any doubts, you can contact us also later on. अगर आपके कोई अभी doubts हैं तो we'll see it. Then Sahil will take over and he will explain you कि किस तरह से Tally will help you in generating e-invoice और उसके जितनी भी चीजें हैं उस aspect से related. तो आप किस तरह से Tally can help you in that. Thank you, CA Navjot ji and CA Asna ji for a detailed deep dive into the domain part. We'll continue with the product. Yeah. How will Tally help you in simplifying this invoicing phase? I'll just share my screen. So e-invoicing, it simply means electronic invoicing, the present and future of the invoicing. Right now, it has been implemented for 10 CR, but yeah, government is planning to bring in more businesses and more turnover based, like 5 CR in April and other businesses including that. The major difference that you'll see in normal invoice and e-invoicing, that it will have an QR code that has been already mentioned by Navjot ji, and it will have an IRN number on the invoice as well as an acknowledgement number and acknowledgement date. This acknowledgement date will be the date on which the software has connected with the portal and generated the invoice. It can be different from the date on which it was raised. Rest the details will be seen that your invoice will have seller details, buyer details, consignor details. But the major difference when you generate invoice will be that it will have a QR code along with IRN number, acknowledgement number, and acknowledgement date. Preparedness for invoicing. Basically, for all those people who have already been under the 10 CR bucket, that information has been or communication has been sent by the department. On receiving this communication, you can log into the IRP portal, and after complete registration, by providing the company details, you can start the invoicing and then select the GSP on the basis of your choice, and it will integrate with the invoice portal, and it will be helpful in generating the invoices from the portal itself. We'll see कि Tally में कैसे GSP को सेट किया जाएगा जब आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे, एंड हाउ टैली से ही इनवॉइस जनरेट हो जाएगा इन फर्दर स्लाइड्स. टेक्नोलॉजी फॉर इनवॉइस. बिफोर अंडरस्टैंडिंग how Tally will be helpful in generating the invoicing, we have to consider that what is the technology behind invoice, what actually your software will do after connecting with the portal. So suppose we have an ERP software, consider Tally being Tally being a GSP, it will send the information of your invoice to the IRP portal. IRP portal will do that duplication check in case the invoice number that has been generated doesn't has been already generated in the portal. After the validation, it will send the JSON to the software that will be updated in the software, as well as the information will be sent to the GST system, that is the GST portal. After that, if there is an applicability of e-way bill, same information will be sent to the e-way bill portal so that the e-way bill can be generated. The impact on the GST system will be that invoice information will be stored on the GST invoice registry. GST now system have a unique invoice, which is unique number that has been generated by you. The GST and one of the sellers get updated, and the 2 and 2B of buyer gets updated. The effect on the buyer will be that the buyer can use the QR code to verify the invoice that has been issued by the supplier. And buyer can also use the ITC related to the invoice in this GST 2A and 2B. Role of a GSP in e-invoice. Basically, Tally is a GSP, that is the GST Suvidha provider, that acts as an intermediary between the customer and the portal and helps in simplifying this whole e-invoicing process.
as I told that it is an authorized intermediary for business to assess IRP. Tax will not be able to connect to the IRP directly. Taxpayer can only connect through the official government sponsored G2B application, or more commonly by application developed by private license GST Suvidha providers. It is an intermediary between the taxpayer and the central IRP server maintained by the government. Taxpayer upload the data first to the servers maintained by the GSP, which is then securely uploaded and transferred with the central GST server. And the GSP use secure ERP procured from the government to build interactive and easy to use applications for the taxpayer to use. In simple words, मैं ये कह सकता हूँ कि when you opt TallyPrime, you don't have to go to the portal for the generation of the cancellation of these e-invoices. We have developed a solution and integrated with the e-invoicing portal that all the creation, cancellation, and other activities could be done with the help of product itself. We will see in further slides how it is how invoicing generation is possible in the Tally, how cancellation is possible. All this will be covered in the further slides. GSP also solve the aspects of availability, scalability, and reliability, and ensure e-invoice requirements of clients are always met. Now the question arises: you need an integrated system to remain on the top of the compliance. A simple and powerful integrated system to generate e-invoicing without disrupting the business process. And the TallyPrime is a complete solution, is a connected solution and a compliant solution. If we talk about the invoicing and e-bills. Now we will check out how you can select Tally as your GSP and enable e-invoicing in the product. There will be a clip that will be played that shows how you can register on the e-invoicing portal after you receive the communication. After registering your organization on the portal, you can log in that particular portal and opt Tally as a GSP to integrate your Tally with the portal. So that you can start using Tally for creation of the e-invoicing. Welcome. In this video, we will look at the process to register for E-Invoice and choose Tally as your GSP for E-Invoicing. To use TallyPrime for your E-Invoicing, you will have to choose Tally as your GSP while registering for E-Invoice. The E-Invoice registration is required to create separate login credentials for uploading and managing E-Invoice details. This is different from your GST portal login. If you are already registered for eBay bill, there is no need to register again for E-Invoice. You can use eBay bill username and password to log into the E-Invoice portal. To register for E-Invoice, open the E-Invoice portal. Click Registration. To open the E-Invoice registration form, enter your GST in and CAPTCHA and click Go to Submit. The company details related to the provided GSTIN number are displayed. To verify the details, click Send OTP. You will receive the OTP on your registered mobile number. Enter the OTP in the form and click Verify OTP. Once the verification is successful, fields to enter username and password are displayed. Enter the details and click Save. You can now log in to the E-Invoice system using username and password created now. Select Tally as your GSP. You have to create the API user. API registration is required to integrate the API directly with your IT system, enabling your software to interact directly with the portal to upload and download information. After API registration, go to User Management and click Create API User. An OTP is sent to your registered mobile number. Enter the OTP to open the user creation form. Select the Through GST option and select
Tally India Private Limited in your selected GST field. Enter username and password that can be used for API access directly through GST, which is TallyPrime. You can use the API username and password in TallyPrime to log in the E-Invoice system and directly upload transaction details for E-Invoicing and import the E-Invoice details. Submit. If you have already integrated with API for an eBay bill system, then you can use the same API credential for the E-Invoice system. You will receive client ID and client secret on your registered mobile number. Once the API user creation is completed, you use the API username and password in TallyPrime to log in to E-Invoice system directly. In case you change the API username or password in the E-Invoice portal, the same will have to be used with TallyPrime to continue online access. Thank you. For more information, visit help. Now from this video, we can have 2 to 3 major takeaways. First of all, अगर आप अपनी TallyPrime से invoice generate करना चाहते हैं, you need to register Tally as a GSP on your invoicing portal. Then only Tally will be able to connect with the portal and generate the invoicing. Secondly, अगर आप already e-bill Tally से generate कर रहे हैं, then you already have e-bill credentials that has been generated by opting Tally as in GSP for e-bill. That same credentials can be used for generation of the e-invoicing as well. आपको separate credentials नहीं रखने पड़ेंगे in case अगर आप e-bill भी Tally से बना रहे हैं. The same can be used for the e-invoicing as well. And third, if you enter the credential details for the e-invoicing, the same has to be edited or the same has to be changed while entering the details in Tally. So these are major takeaways. After the registration of Tally in the GSP, what we can do is that we can select that particular company in which we need to apply the invoicing, and we can select the invoicing applicable, yes, and applicable date. We can put bill from place from which the invoice will be generated. Then we can also select this option in case we want to generate e-bill and e-invoicing from Tally itself. Then we can select this option that is send e-bill details with e-invoice. In further slides, we will discuss the different scenarios that how TallyPrime can simplify the e-invoicing experience and how you can generate and cancel, and apart from generation cancellation, handle certain other scenarios which can arise while generation of invoicing. Firstly, we will look on the case where we generate invoice for a particular transaction in Tally. We will showcase in this case where we put a transaction in Tally and create a e-invoice for the same from the Tally itself using the credentials that has been created from e-invoicing portal. We put the whole information that we want to put by quantity and mentioning the rate. We click on provide GST details, invoice details, and we will accept this transaction. Tally will automatically ask that do you want to generate invoice for this particular transaction. We can click on yes. After clicking on yes, we have to put the username and password that has been created by us on the e-invoice portal. After putting the username and password, the Tally will connect with the portal and invoice will be generated and the information will be fetched in the Tally on the invoice. We can check the preview of this particular invoice. You can check whether the QR code has been generated and RN number along with acknowledgement number and acknowledgement date has been created on in the product. Similarly, there could be scenarios where there are different maker and checker. Maker means that someone else is creating the invoices and there is another person who is checking those invoices. So we can also
do the bulk upload of all the invoices in a single go. Tally provides you the flexibility of the same, and this can also be done within a single click. Let's see this particular scenario in the product. We can open the E-Invoice report with the help of the go-to and check out that which all invoices are pending for E-Invoice generation. We can click on the exchange button and click on hand for E-Invoicing and select the particular transaction we want to send for the E-Invoicing. Suppose we have 4 transactions and we want to create E-Invoice for 2 particular transactions, then we can do the same. We'll just put the credentials. Tally will connect with the portal, and the invoice for selected transactions will be generated and updated in the Tally itself. Similarly, we'll select these 2 transactions and send to the portal for the generation of E-Invoice. Now, all the invoices for these transactions have been generated. And we can also check the details as well in the Tally, that what are the acknowledgement numbers and IRN number of every particular transaction. All the information will be fetched in the Tally itself, and this will be visible on the invoice as well. As I've told you that Tally has a functionality that if you want to generate E-Bill along with the invoice, that can also be done simply within the product. You don't have to go to the portal and waste time over putting the information in the portal itself. It can also be done in Tally itself. Now we'll see the scenario where we want to generate the E-Invoice along with the E-Bill. If there is a situation that E-Bill is applicable on particular transaction. So we'll pass a CL transaction for that. We'll put the party details as well as the item details. Transaction we pass. Now we'll put the details for the E-Bill. What is the pin code and the address as well as the kilometer required. By putting all these details, we are ensuring that the E-Bill is also generated along with the invoice. After that, the same bill to ship to place has to be determined. This will be pulled automatically by Tally. After the passing of transaction, Tally will automatically ask that we want to create invoice and E-Bill for this particular transaction. We'll click on yes. We'll put the credentials. Now, this credentials that we are putting, it could be either of E-Bill or either could be of invoice. We require only one credentials. अगर हम E-Bill पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं तो हम इनवॉइस बिल बना सकते हैं. हम अगर इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं जीएसपी में टैली को सिलेक्ट कर रखा है तो E-Bill बन सकता है. Now both E-Bill और invoice दोनों जनरेट हो चुकी हैं and it is visible in the invoice. We can see that along with the invoicing details, we have also the E-Bill number जो कि हमारे invoice पे आ चुका है. If we go to the second page, we can see the E-Bill document along with the IRN number and the complete details. So within a single click, we can generate the invoice and E-Bill. And automatically ये सारी की सारी details आपके transactions में भी input हो चुकी हैं automatically. So it is very much simpler, very convenient for a user to create an invoice as well as E-Bill from the Tally itself without going to the portal. Flexibility to generate offline JSON to handle exigency scenarios. So there could be scenarios that जहाँ पे आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा. सपोज देयर इज सिनेरियो जहाँ पे आपका इंटरनेट काम नहीं कर पा रहा, आप अभी उसका इनवॉइस नहीं जनरेट कर पा रहे. In that case, you can export the JSON from the Tally itself and upload the same to the portal afterwards and generate e-invoice.
Apart from that, we have given a complete invoice report in the Tally itself, which will give you a complete idea that what invoices are pending for invoice generation, what kind of iron have been already cancelled, कि हमने कितने invoices generate किए हैं, कितने cancellation करने हैं, अगर कोई cancel के लिए pending है तो, apart from that, अभी generation कितनों की होनी है, it will also give a complete overview of that. We can know the status of each invoice that has been generated, cancelled or rejected by the IRN, via IRN register. We can also generate IRN from pending invoices, as well as we can update the IRN from the invoices generated directly from the portal. अब there is a scenario कि जहां पे आपने directly portal में जाके अपना invoice बना लिया, in the scenario कि जहां पे अभी हम transaction करना भूल गए, हमने सीधे जाके पोर्टल में इनवॉइस बना लिया, लेकिन हमने ट्रांजैक्शन बाद में पास करी, हमने मैन्युअली तो अपडेट कर दिया टैली में, बट वी वांट कि जो इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अवेलेबल है वो डायरेक्टली फेच होकर टैली में भी आ जाए. सो टैली हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डू दैट एज वेल. If you have generated IRN directly, the tally can fetch the information in the transaction itself as well. As I told you that from GoTo, we can opt for E-Invoice, which will showcase all the information regarding कितने reject हुए हैं, कितने vouchers अभी change किए गए हैं IRN generation के साथ, कितने IRN generate किए जा चुके हैं manually और कितने cancel हैं. Suppose we have generated manually and we want to fetch the information, we just have to click on that particular transaction and click on all tell, that is get IRN info. Tally will directly connect with the portal and fetch the information that has been already generated on the portal. Now we can see that the transactions has been updated. So जो हमने manually invoice create किया था portal पे, उसकी information tally में आके fetch हो चुकी है. Tally ने transaction level पे उससे update कर दिए, along with the acknowledgement number, acknowledgement date, as well as the IRN number. सारी information fetch हो चुकी है. We can also check the print preview of this particular invoice कि QR code आ चुके हैं इस particular transaction में, as well as along with the required other details. So in such exigency scenarios जहाँ पे आप tally से नहीं कर पा रहे और आपने directly portal से कर लिया, तब भी tally उस केस में support करेगी, तो सारी इंफॉर्मेशन फेच आउट कर लेगी. Tally can also identify the invoices which are modified, जो मॉडिफाई किए गए हैं वो भी आपको Tally बता देगी. एंड नवजोत जी ने जिस सिनेरियोस में बताया था कि कैंसिलेशन की प्रोविजन दी गई है. यस, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ cancellation of e-invoicing within 24 hours of generation. तो वो भी टैली ने उसमें भी इंटीग्रेशन कर ली है. You can cancel that particular e-invoice that has been generated through Tally. उसमें भी different scenarios हैं. एक scenario ये है that you have cancelled the IRN on the portal itself. आपने manually जाके portal में login किया और IRN cancel कर दिया. And the another one is that कि आपने आयरन अपने टैली में कैंसिल करना है और फिर आयर पे कैंसिल करना है. दोनों ही सिनेरियोस का इफेक्ट टैली से इजीली किया जा सकता है. I'll repeat this scenario कि एक सिनेरियो ऐसा है कि you have already logged into the portal, you have cancelled the IRN, you just need to update that cancellation in the books. The another scenario is that you have to cancel the IRN from your books, then update the same into the portal. So both of these scenarios are possible, but yes, there is a time limitation to it. Time limitation in sense, there is a 24 hours window for it. After 24-hour window, you can't cancel the IRN. In that scenario, आपको वही credit note issue up करना पड़ेगा. In those scenarios, now we'll see both these scenarios in Tally, that how Tally will support you and help you out in the cancellation of the invoices as well.
We'll open an E-Invoice. We'll open a transaction of an invoice that has already been generated. Now we have two options here. Mark the invoice as cancelled, cancel the item with the reason and prepare it to upload. If we select as the mark as cancelled, it means that आपने पोर्टल पे ऑलरेडी उसे कैंसिल कर दिया है, बस आपको बुक्स में कैंसिल करना था. टैली ऑटोमेटिकली उस आइटम को कैंसिल मार्क कर देगी. You don't have to do anything else क्योंकि आप पोर्टल में ऑलरेडी उसे कैंसिल कर चुके हैं. This was the first scenario. The second scenario is that कि आपको टैली के अंदर से कैंसिलेशन करनी है, इनवॉइस को पोर्टल पे अपडेट करना है. In that scenario, we'll open the transaction. There is a command, cancel the invoice with the reason prepared. We'll put the details that what is the reason for cancellation, and we'll put the remarks. Now this transaction will be removed from the generation part and it will move under the pending. कि अभी ये pending है cancellation के लिए because we have already marked as a cancel. The transaction is visible under cancellation. We'll click on the exchange button that is available and we'll send this particular transaction to the portal and cancel it. We'll put the credentials here. Now the Tally will connect with the invoice portal and update the transaction in the books as well and update the cancellation in the portal itself as well. That's why I was saying that the solution that Tally is offering is complete, compliant and connected solution in the case of invoicing as well as for e-bill. Now we can check that the RN has been cancelled through E-Invoice and which has been marked in Tally as cancelled. So cancellation scenarios could be handled easily in the Tally itself. Invoice rejected by RP, understand the reason and do the necessary revisions. In order to ease the operations, whenever an invoice is cancelled, there is a reason involved कि क्यों cancel हुआ है. जब भी अपने Tally में invoice बनाएंगे और वो अगर cancel हो जाता है तो उसका रीजन मेंशन होगा कि कैंसिलेशन का रीजन क्या है. इट कुड आइदर बी अ पिन कोड मिस्टेक, आइदर इट कुड बी एन इनवॉइस numbering mistake. By invoice numbering mistake is that there are certain provisions under which आपकी determine कि कितनी numbers होने चाहिए in the invoice number. For e-invoicing they have mentioned 16 digits including the special characters as well. So there are multiple errors which can generate when you are trying to generate the invoices, but Tally में वो आपको error completely visible हो जाएंगे and accordingly you can alter the transactions and resend it for e-invoicing. Apart from that, Tally will give you alerts whenever there is an issue or there is an information missing. These alerts will be available in multiple scenarios to prevent redundancy and ensure the latest data is shared with e-invoicing portal. So Tally will help you in those scenarios as well. It will also help safeguard against accident, modification, deletion, cancellation of iron generation for particular transaction. Whenever you try to cancel it, there will be alert. When you try to modify a particular transaction, there will be alert. So, so by mistake, you should not cancel or modify the particular transaction. In simple words, Tally इतनी flexible है और यूजर फ्रेंडली है. अगर आप कुछ अल्टर करने की कोशिश करेंगे, Tally उसमें पर्टिकुलरली अलर्ट देगी आपको कि हाँ आप कैंसिल कर रहे हैं, आप अल्टर कर रहे हैं, जब मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए दैट व्हाट यू आर डूइंग और आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली Tally के अंदर. Apart from that, अगर suppose there is some connectivity errors or issues, then also Tally has a launched website called status.tallysolution.com where you can check the services status. Services status means suppose in some scenario जहाँ पे e-invoicing system चल नहीं रही बैकएंड से और from जब पोर्टल डाउन है गवर्नमेंट की साइड से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं status.tallysolution.com पे जाके कि कौन सी सर्विस एक्टिव है, कौन सी सर्विस अभी डाउन है. Like it is visible on my screen that third party services means अगर पोर्टल बाय चांस यहाँ पे
डाउन होता है तो स्टेटस यहाँ पे रेड हो जाएगा। अब ये ग्रीन है, इट मींस पोर्टल इज वर्किंग, आप टैली से डायरेक्टली इन्वॉइस कर सकते हैं। You will never have to go out of the product for e-invoicing. जैसे कि अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप सिंगल क्रिएशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड कर सकते हैं, बल्क कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सम सिचुएशन जहां पे आप मैनुअली अपडेट कर रहे हैं पोर्टल में, वो भी आप टैली में मैनेज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो टू पोर्टल अगेन एंड अगेन व्हेन यू आर यूजिंग TallyPrime. You can use do all this multitasking like creation, cancellation from the product itself. And again, for this particular functionality in TallyPrime, अगर आपका TSS valid है, then it is completely free of cost. You can apply this functionality from the first day. But अगर आपका TSS, that is Tally software services, are expired, you need to renew it so that these connected services of e-invoicing and e-bill can be activated in your Tally. By that, that's it from my side. If you have any queries regarding the other activities or regarding the e-invoicing in TallyPrime, you can drop your queries in the chat box. I'll be happy to answer these queries. Sahil ji, thank you so much. You explained it very well, and I can see that Tally provides a sort of like A to Z solution. मतलब चाहे वो creation से cancellation, amendment, उसका status check करना, from each aspect they are assisting you in that. And उसके अलावा मतलब their team is always there if you face any sort of issue while performing any sort of action which Sahil ji explained. So Sahil ji, what do you think, like for अगर हम SMEs की बात करें तो SMEs के लिए like what do you suggest, like जो Tally की जो functionality है, इससे time काफी reduce हो जाएगा उनका, मतलब अगर हम देखें तो उनको extra burden feel नहीं होगा। डेफिनेटली नवजोत जी, जैसे कि आप इस सिनेरियोस में देखा कि एक नॉर्मल सिनेरियोस में अगर आप अगर टैली यूज नहीं करते तो आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, एंड इट डेफिनेटली विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक एज वेल व्हेन वी पुटिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल. बट इन द केस ऑफ टैली इट इज मच मोर सिंपलर एंड कन्वीनियंट फॉर द यूजर because it can be directly connected with the portal and generate e-invoicing for the SMEs. मतलब आपका अगर accounting software ही मतलब if it is connected to GST, so certainly it will reduce our time for performing a lot of activities. So with this, I think I have answered all the queries also, but still we will have a look. अगर साहिल जी आपके लिए कोई query है तो Sure, I'll just go through the. There is a question that they have started using e-bill online without using Tally. Now I have TallyPrime. How I want to register for both e-invoicing and e-bill? How to proceed? Sir, as I already told you, एक वीडियो मैंने showcase करी थी कि you can register the same on e-invoicing और e-bill portal. आप किसी भी एक पोर्टल में register कर सकते हैं और GSP mark कर सकते हैं Tally को. If you do want to do with the e-invoice, just open that particular portal. Go under the API registration and select Tally as a GSP. जैसे आप e-invoice के लिए एप्लीकेबल करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली e-bill के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड आफ्टर एप्लीकेबलिंग द सेम ऑन द पोर्टल, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी Tally में जाके F11 देयर इज F11 फंक्शनैलिटी, और आप पर्टिकुलर कंपनी को लिए F11 में जाइए और जो भी एप्लीकेबिलिटी है वहां से एक्टिवेट कर दीजिए. एक क्वेश्चन है अंकुर अग्रवाल जी का, सॉफ्ट कॉपी ऑफ ई-इनवॉइस इज वैलिड और नॉट? सो एज पर इफ वी सी द रूल्स, तो आप ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं टैली के थ्रू, बट अल्टीमेटली आपको उसको डिजिटली साइन या फिर फिजिकली साइन करना पड़ेगा एज पर द रूल्स. एक चीज और है साहिल जी, जो है
अगर मान लीजिए आपके पास कोई इनवॉइस आ रहा है, सो लाइक उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं टैली के थ्रू दैट कि भी ये वैलिड है नहीं है? सर देखिए, इनवॉइस अगर आपके पास आ रहा है, अभी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है वैलिडेशन की, बट आपके पास अगर जो क्यूआर कोड होता है उससे वैलिडेट हो सकता है, बिकॉज क्यूआर कोड में पर्टिकुलरली सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। एंड अगर वो वैलिड इनवॉइस है तो जैसे मैंने बताया कि जीएसटी, जैसे आपने बताया कि जीएसटी इम्पैक्ट पे पड़ेगा उसका, तो आपको पता चल जाएगा वैलिडिटी का। बाकी हाँ, वैलिडिटी की इन केस की कैसे इनवॉइसिंग वैलिड है या वो उसको उस पर्टिकुलर सप्लायर को बनाना मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी, देखिए जितने भी सप्लायर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन सेंड कर दी है, एंड इवन पोर्टल भी लाइव हो चुका है, सो दे कैन प्रैक्टिस इनवॉइसिंग बिफोर 1st of October as well. एक चीज है जो मेरा भी डाउट और काफी लोगों का डाउट है, दैट अगर मान लीजिए मेरा 50% टर्नओवर ऐसा है जिसपे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है और 50% ऐसा है जिसपे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो मैं सीरीज को मतलब अलग अलग भी कर सकता हूँ या सिंगल सीरीज में भी उसको कर सकता हूँ? So देखिए, बेसिकली जो इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी वो मेरे टर्नओवर पे है, वो मेरी पार्टी के टर्नओवर पे से उससे कुछ लेना देना नहीं। इट इज सिंपलर B2B, अगर मेरी B2B ट्रांजैक्शन है तो उसका मैंडेटरी है, इनवॉइसिंग बनेगा, और अगर B2C है उस केस में टैली और पूछेगा ही नहीं आपको बनाने के लिए। अगर आपने एक पार्टी का जीएसटी नंबर डाला हुआ है और आप पे एप्लीकेबिलिटी आ रही है इनवॉइसिंग की, तो टैली ऑटोमेटिकली पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है। इन केस आपने किसी पार्टी का जीएसटी नंबर डाला ही नहीं है, वो B2C कस्टमर है, तो उस केस में टैली वो पूछेगा ही नहीं कि आपको इनवॉइस बनाना है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या नहीं। और उसकी सीरीज भी मैं अलग कर सकता हूँ, इनवॉइस की सीरीज भी B2C और B2B दोनों की? सर दैट कुड बी डन, दैट कुड बी डन, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप एक सेम सीरीज में भी लेके चलते हैं तब भी कोई मेजर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। I think with this we have answered almost all the questions. And there is a question that do we have to enter user ID and password again? Every time. Yes. No sir, just wanted to answer that कि जैसे ही आप टैली में इनिशियली पुट करेंगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड will be saved for 6 hours, 6 घंटे के लिए सेव हो जाएगा। Basically it is not Tally's limitation, it is the limitation of the portal कि वो 6 घंटे के लिए अलाउ कर रहा है सेव करना इंफॉर्मेशन अपनी। After 6 hours you can re-log in the with the credentials. I think all the questions are covered. Jyoti? जी बिल्कुल। So thank you so much attendees for attending the session, and I think we cleared the doubts, basic the doubts जिन लोगों के लिए नया concept है उनके काफी doubts हमने clear किए। And in upcoming times also Tally इस तरह के webinar organize करता रहेगा। E-invoicing को से related हम एक next जो हमारा session होगा वो थोड़ा technical रखेंगे हम, जिसमें आपके doubts पे focus किया जाएगा कि किस तरह के practical issues आ रहे हैं different segments में। So with this I'll take your leave. Thank you so much.